Hello and Assalamu alaikum. I am here with a video weathering and mass wasting, and in this video I will explain these processes. Let's start our video. With this diagram you can understand the processes of weathering, erosion and deposition. Weathering is the breakdown of rocks because of different weather conditions. And what are these weather conditions? Rain, temperature, wind, etc. Now, what is erosion? Erosion is the transportation of the broken material, and deposition is to redeposit the broken material on another place to form new landforms. But in this chapter, you will only read about the weathering and erosion. Now, observe this diagram. You can observe the difference weathering and mass wasting. So weathering is the breakdown of rocks at the earth's surface by the action of rainwater, extreme temperature and biological activity. It does not involve the removal of rock material. वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशन, जिसमें रेन, जिसमें टेम्परेचर, जिसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज शामिल हैं. बट द रॉक्स रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. So weathering is the breakdown of rocks because of different weather conditions. And mass wasting is the movement of rocks and soil down slopes under the influence of gravity. Rockfall, slumps and debris flow are all examples of mass wasting. Now, what is mass wasting? When the broken material that break during weathering start to move downward, it is known as mass wasting. Now, you can see the pictures of weathering, and these pictures are different from each other. So there are two types of weathering: mechanical weathering and chemical weathering. You can understand that these terms with the help of this web diagram. Weathering is the breakdown of rocks, and the rocks break in two ways: mechanically and chemically. So there are two types of weathering: mechanical weathering and chemical weathering. And the actions related to mechanical weathering are expansion and contraction, freeze and thaw. And the actions related to chemical weathering are oxidation, carbonation and hydrolysis. Let's discuss about mechanical weathering. Mechanical weathering is the physical weathering when rocks break up physically into smaller pieces because of different weather condition. And in this weathering, large rocks break into smaller rocks and then turn into sand particles with passage of time. मैकेनिकल वेदरिंग जब रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं इन अपीयरेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये सडनली नहीं होता. डिफरेंट वेदर एक्शंस की वजह से जब रॉक्स ग्रेजुअली वीक होती हैं और उसके बाद ब्रेक डाउन होती हैं, उसको फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है. व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग इज द टाइप ऑफ वेदरिंग व्हेन द rock particles react with water and decompose and change their shape chemically. Now we will discuss mechanical weathering. Breakdown of rock physically, which change the physical appearance of rock, is called mechanical weathering or physical weathering. So जब फिजिकल शेप जब चेंज हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस जब चेंज हो जाती है रॉक की, रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है फिजिकली, तो उसको मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है. मैकेनिकल वेदरिंग के साथ टू एक्शंस हैं: फ्रीज थॉ एक्शन. लेट्स डिस्कस व्हाट इज फ्रीज थॉ एक्शन. फ्रीज थॉ वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग दैट हैपेंस इन कोल्ड एरियाज where ice forms. So ये उन एरियाज में होती है जो कोल्ड एरियाज होते हैं. और इसमें फर्दर प्रोसेस क्या होता है?
जब किसी भी क्रैक से वाटर एंटर होता है और बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट ये वाटर फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने की वजह से वाटर एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने की वजह से ये उस क्रैक को पुश करता है और रॉक को भी, उस क्रैक को भी एक्सपेंड करता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये एक्सपेंशन चेंज हो बढ़ती रहती है तो ये उस रॉक को फिजिकली ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आपने फ्रीज़र में पानी की बोतल को फ्रीज़ करने के लिए छोड़ा हो, तो जब आप फ्रोज़न बोतल को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो वो एक तो ये कि वो सही से स्टैंड नहीं कर पाती क्योंकि उसका बॉटम एक्सपेंड हो चुका होता है, और दूसरा उसकी लिड इजीली ओपन नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वहाँ तक वाटर आ चुका होता है एक्सपेंड होके। तो इसी तरह से जब ज़मीन के अंदर क्रैक्स के अंदर वाटर एंटर होता है और उसके बाद वो एक्सपेंड होता है तो वो उस क्रैक को फर्दर एक्सपेंड करता रहता है, और उस एक्सपेंशन की वजह से विद पैसेज ऑफ टाइम रॉक ब्रेक डाउन होती है। और ये याद रहे कि फ्रीज था एक्शन कोल्ड एरियाज में होता है। सेकेंड है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ रॉक्स। ये वेदरिंग का वो एक्शन है जो हॉट या वार्म एरियाज में होता है, और ड्यूरिंग द डे द रॉक्स एक्सपेंड एंड एट नाइट द रॉक्स कंट्रैक्ट, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम this gradual expansion and contraction weakens the rock, and then the cracks appear on the surface, and then these cracks particle shatter down and the physical appearance of the rock change. आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे रॉक एक्सपेंड एंड ड्यूरिंग द नाइट रॉक कंट्रैक्ट, और जब ये बार बार ये प्रोसेस होता है तो उससे रॉक की सरफेस पे छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, और फिर ये क्रैक्स जब शटर डाउन होते हैं तो उससे रॉक्स की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, और ये वार्म एरियाज में होता है। नाउ हमें क्यों फील नहीं होता ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन? क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, इसलिए हम उसको फील नहीं कर पाते। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल वेदरिंग. In chemical weathering, three actions are there. First one is oxidation. When oxygen combines with other substances like iron particles in the rocks, they make iron oxides and give a reddish look to the rocks, which is known as oxidation. जब आपको rocks में कहीं कहीं red color नज़र आता है तो उसको oxidation कहा जाता है, और इस oxidation की वजह से rocks gradually अपनी appearance को change करती हैं chemically. Then carbonation. When the carbon dioxide gas react with water, this process is known as carbonation. And hydrolysis, when different particles from the soil make a solution with water and change the appearance of the rock, this is known as hydrolysis. Now we will discuss erosion. Rocks break down physically and chemically, but they remain on its original position. But when this broken material start to move, this process is known as erosion. So erosion is the wearing away of the land by force such as water, wind and ice. Erosion has helped to form many interesting features of Earth's surface, including mountain peaks, valleys and coastlines. अब वो मटेरियल जो कि वेदरिंग में ब्रेक डाउन हुआ वो रहता अपनी पोजीशन पे है, बट जब वो मूव करना स्टार्ट करता है तो उसको इरोजन कहा जाता है। और थ्री मेन एजेंट्स ऑफ इरोजन आर वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स. Agents of erosion mean the particles that help the broken material to move to another areas. So erosion is the transportation. How these agents work? Erosion by water. When the broken material move with rainwater or river water, this is known as erosion by water. ठीक है, जब बारिश होती है और वो बारिश का पानी जब सरफेस रन ऑफ करता है उसके साथ जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है उसको इरोजन बाय वाटर कहा जाता है. विंड, ऑब्वियसली ये उन एरियाज में होगी जो डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ की विंड स्ट्रांग होती है, तो वहाँ ब्रोकन मटेरियल हवा के साथ उड़ जाता है और उड़ने के साथ साथ ये डिफ्लेशन भी करता है, यानी दूसरे रॉक्स को वो पार्टिकल्स स्क्रैचेस भी डालते हैं और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं.
और ग्लेशियर्स वो एरियाज जो कोल्ड एरियाज हैं वहाँ ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आर अ माउंटेन ऑफ मूविंग आइस, और जब ये मूव करते हैं तो ये डिफरेंट शेप्स बनाते हैं और उसके साथ साथ ब्रोकन मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. Now we will compare weathering and erosion. Weathering and erosion both processes change the shape of the earth, and both help work with the help of wind, ice, gravity and water. But weathering is the breaking down of rocks, and the movement of these broken rocks is known as erosion. Thank you.